बहुत 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 बेहतरीन होने वाले हैं इंडिया के लिए अगले 10-20 साल। मतलब सीख जाओ यार, मैं कह रहा हूँ, सीख लो ये चीज। Welcome, Kanan, to our podcast. हाय, थैंक यू रोहित, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine. So, Kanan, my first question would be, you start. I have heard somewhere that you got 38% in your 11th class. Am I right? यस, दैट्स करेक्ट। Then you qualified chartered accountancy in first attempt. यस। Then you quit your typical Big Four job, like which many of the CA aspirant dream of, and you started teaching personal finance and fundamental analysis to the students. So, how did all this happen? Can you share with us? Give a brief journey. Yeah, I'll quickly share. Just a few years before that, I was preparing for a maths test in class ninth, and I was the least interested kid in studies, and I was, more inclined towards playing sports and playing guitar and singing, and I wanted to become a singer and everything. Okay, that's something different. I was preparing for a maths test, and my father asked me, "Are you done with your preparation?" I said yes, even though I wasn't, and he asked me, "Okay, what's an asset or a liability?" So I said, I don't know. Then he gave me this book, Rich Dad Poor Dad, which I went on to read, and I found it quite interesting, and that's where it all began. And yes, if I talk about class 11, I scored badly, and after that, in class 12, I did do well as compared to class 11. But the only thing was, I didn't do well enough to land in a good Delhi University college. So I had no option but to do CA. Coming from a family of around 8 CAs, I had no option but to do chartered accountancy. So I had many friends in the CA classes. At that time, classes used to happen physically in a hall where 1,000 people used to study together. I used to see people, they were answering during my intake classes. They used to answer so quickly. They guys were from uh, your college. They guys were from even Sri Ram College, Hindu College, and they were very quick in answering stuff. And what I knew was result was just 4%. So I could right away spot those 4% in front of my eyes, and I was a mediocre student. So I had no option but to give my 100%. And I remember I used to wake up at 5, catch the metro train at 5:30, come back to home at 11, and still study after that. And not just that, even while traveling in metros, I made sure that I used to study. And even if I didn't get a seat and I had to do my homework, I used to sit down on the floor, although that's not allowed as per DMRC norms, but I still used to do that. So after that, after that, when I landed in CA finals, that momentum continued, and thankfully, I could clear CA finals in the first attempt itself, just like CA intermediate and CPT. And I did my articleship from KPMG in mergers and acquisitions tax, and after that I joined PwC in the same field. It was an interesting journey of over 4 years, and I really found it to be exciting. It was just that I thought, since I have a good backing, my parents are both of my parents are chartered accountants, and there's nothing as such which is stopping me from quitting the job and trying something new. And that's what I did. So for 1 year I was into consulting people for these personal finance matters, be it mutual funds, be it real estate, be it loans, or be it insurance. I was directly dealing with people on a personal level. But what I understood was that this thing is very limited in nature. This way I won't be able to spread the knowledge that I'm gaining out of this industry to the masses. And the only way I could find at that time was through education. That's when, thankfully, I would say Neeraj sir also met me, and we thought of making this platform, learnpersonalfinance.in, where we can, cater to masses and tell them what wrong things are happening to them, what wrong things they are doing, and what wrong things even the 50-year-olds have done in their 20s. And I just wanted to communicate that to the world, because if we set a right foundation in the beginning, we are poised to grow financially towards financial freedom, right? So that's the thought behind learnpersonalfinance.in.
So yeah, I was scrolling through your LinkedIn profile and I saw you started your investing journey in 2017. Yeah, Am I right? Yeah. yeah, So you bought first share, I guess, of Deepak Nitrite yeah, through the stipend which you were getting. yeah. So what brought you to the world of investing and why only direct invest in stocks, not in mutual funds? So I invested in mutual funds also, and I'll share my journey as well. So my father, first he asked me to invest in mutual funds only, which I did, right? And just after that, this budget had come of 2018, where Mr. Jaitley had said that we are gonna, tax the income tax gains, the Capital gain. capital gains, Yeah. yeah, the capital gains to income tax at 10% over 1 lakhs without indexation benefit, and the small caps shattered. And I had invested in small cap funds only, and some of the amount I'd put in mutual funds, and some of the amount I'd put in a few other stocks and Deepak Nitrite, right? So Deepak Nitrite crashed, not crashed, I would say it corrected to an extent. And what happens when you don't have knowledge is, when you don't have knowledge, when you don't, and you have borrowed conviction. So I had borrowed conviction of my father. I didn't know what was the capacity expansion plan. I didn't know what the management was up to, and I didn't know. So basically, I was afraid that a share that I had bought around 240 was, it got reduced to around 200 or 220, somewhere between that. And for me, it was a lot of amount because I was investing 12 to 14 hours a day of my article shift, and I was getting 15,000 a month. Of course, that's also high, but ultimately it was my hard-earned money, and I had borrowed conviction, and I invested through borrowed conviction without understanding the instruments. So yeah, that's so I did both the things. The wrong thing that I did with mutual funds was I looked at the past performance, and that has nothing to do with the future performance, I would say. And you should really understand how mutual funds work and how mutual funds should be selected. That doesn't come by looking at past performance. So I sold that stock, Deepak Nitrate, coming back to that at 280, around 280 levels, because I was like, ठीक है यार, 16-17% प्रॉफिट हो गया, लेट मी जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस हसल. यार ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं निकल गया. अगेन समवन आई हैड इन्वेस्टेड थ्रू हियर से ऑन टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स मैंने 280 पे लिया था, 250 पे गया. आई वाज लाइक यार Yes, ये क्या हो रहा है. back आई in यूज्ड टू लुक एट, 2017. Are you talking yeah, about 2017? 2017-18, 2017-18. So I remember when I went for my study leaves, just before that, I not before my study leaves, in fact, I was doing my ITT. So I could observe that I'm not investing my time wisely in studies. So I exited from all the stock positions, and we have that loss aversion bias. So I Yeah. exited Tata stock, Tata Motor stock at just 284. That was just a rupee or two above my buying price, and I was happy. And then when I observed Tata Motors, it went down to 62. Yeah. Because see, what happened at that time, what is happening today is a different thing. I had borrowed conviction. I did not have the knowledge. I was just investing on hearsay and what my father was saying without understanding the fundamentals. So that's something wrong we do. And Deepak Nitrite taught me a lesson that we should actually study stuff in order to hold. Because if we don't understand stuff, we won't hold it for long. या सो एज यू सेड, जैसे कि मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी याद आ गई मुझे अभी बिल्कुल. तो मैं पैसिवली ट्रैक कर रहा था स्टॉक मार्केट को जब मैं 8th क्लास में था. तो मैं पैसिवली ट्रैक करता था, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता था. तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है कैश फ्लो, क्या होता है बैलेंस शीट, तो कुछ नहीं पता था. तो अब 11th में कॉमर्स ली तो थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत पैसा भी लगाया. सबसे पहला मैंने लगाया था IRCTC के IPO पे. उसके Okay. बाद एक्टिवली मैंने स्टार्ट किया जब लॉकडाउन हुआ, मार्केट बॉटम बनाया मार्केट्स ने. तो मुझे अभी भी याद है कि जो मैंने बड़ी अमाउंट लगाई थी पहली, वो मैंने लगाई थी BHEL के शेयर में, और मुझे आज भी याद है उसका प्राइस था 21 रुपीज़. तो जैसे Okay. ही वो शेयर 21 से 30 गया, मैंने बेच दिया. और फिर उसके एक महीने बाद वो शेयर 30 से 35 गया. तो वही जैसा आपने बोला कि लॉस एवर्जन बायस, वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई. और हाँ, जब स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्ट करता है तो सब वही करते हैं, या तो देखते हैं कि ये पिछले एक हफ्ते में कितना बढ़ गया है, तो उस पर जज कर लेते हैं कि आगे भी इतना ही बढ़ेगा. और या तो एक बहुत कॉन्सेप्ट है, Right. पी पी देखते हैं हम सब लोग. तो पी मोस्टली हम देखते हैं, जितना हमने यही सुना होता है कि जितना कम पी होता है उतना अच्छा होता है.
तो जैसे कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, प्रीमियम पी पे ट्रेड कर रही होती है, लाइक एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाइटन, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कह सकते हैं जिन्हें हम, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये सबके साथ होता है। इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जेनजी के पास पेशेंस बहुत कम है, सब रील स्क्रॉल करके सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो अब मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि यार मेरे पे 20,000 रुपये, मेरे पे 30,000 रुपये, पैसा बनवा दे, आईफोन लेना है मुझे, पैसा बनवा दे कैसे भी 2-3 महीने में। तो मैं उन्हें बोलता हूँ यार बॉस, मुझे अगर दुगना तिगना करना आता पैसा 2-3 महीने में, तो मैं कॉलेज क्यों कर रहा होता, मैं यही फुल टाइम कर रहा होता। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके क्या थॉट्स है इसमें, जो जेनजी को क्विक बक चाहिए मार्केट से, तो उसमें आपके क्या थॉट्स है? Like around what? Around अराउंड मतलब मेकिंग क्विक बक, what to, इन around मार्केट, making a quick buck. क्विक बक, See या what happens is अगर 2-3 गुना पैसा हर 2-3 महीने में, या अगर मैं 20% भी बोलूँ, हर 2-3 महीने में 20-20% पैसा बन रहा होता, तो आप और मैं कभी, या कोई भी दुनिया में नौकरी नहीं कर रहा होता, सब शेयर मार्केट की ट्रेडिंग ही कर रहे होते। और उन कंपनीज जिनकी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उनमें भी कोई नौकरी नहीं कर रहा होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? You have to have a reasonable set of assumption around your return expectation, and that's not how things work. If there's someone who's posting screenshots कि मैंने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, please understand on the days he's not posting that screenshot, he's making losses, and he's making massive losses. So this is a too good to be true kind of situation, and this forms, the premise for our wrong set of expectations. And we should not run after, small kind of gains that we can earn in a quick period of time. That's once in a decade or once in a 5 year kind of event that we can make our money double in 3 months. हमने किसी stock में पैसा लगा दिया and it doubles in 3 months. It happens. I'm not saying it doesn't happen. Or even in 6 months, 7 months, that does happen. But the limited point is it a regular phenomenon? Can we double our portfolios in every 3 months? Then, my friend, why are we even doing our jobs? We just need 10,000 money, 10,000 bucks to start with, and या we can be crore-patis in a few years, right? So it doesn't happen that way. And big money is made by waiting big and investing in the right opportunities, staying when everyone is exiting, and rather, loading up your money on that script when you think that things are going downhill. When the world is thinking that the things are going downhill, when actually they are not, and it's just the liquidity pressure that's making it move down. So I will sort one advice from you. Like I entered mainly in market with I would say a reasonably good capital according to me in COVID. So Okay. when I entered, Nifty was around, I guess Nifty made a low of 7,300. Okay. So I saw in news analyst call like Nifty will go to 6,300, Nifty will go to 5,000, and when I see this in hindsight, I say, boss, no one can predict the market. But in that moment, like I can only imagine like people who have invested big sums of money in the market, they are losing their sleep, I guess. So what would be your advice if we are seeing like 10%, 20%, 30% correction in our portfolio? So should we sell our stocks? Should we completely exit, or should we hold them? What should we do? See, if you look at the stock markets, the Indian stock markets, if I talk about them, they have been an upward trajectory if we talk about the long term. In a year, there will be so many days when the markets will close in the red. In a 5 year period, you might see some of the chunks when, the markets have not returned positively, right? But if we talk about a 15-year horizon, or a 20-year, 25-year horizon, and we all live in a we all live on a going concern assumption that we are going to see tomorrow's sun, and even after some years. So that's how we should be investing. If that's not something that you need in 3 to 5 years, invest in stock markets and debt reasonably. That's my limited advice from an educational perspective. Of course, nothing that we are saying is investment advice over here. So वही है यार, लंबे टाइम के लिए आपको लगाना चाहिए, और मोटा पैसा भी वैसे ही बनता है जब आप लंबे टाइम के लिए पैसा लगाओ। एंड इट डजेंट हैपन ऐसे कि हर 2-3 महीने में आप अपना पोर्टफोलियो जगल करते रहो या उसको देख के डर जाओ। देयर आर सम एप्स जो आपको रोज नोटिफिकेशन देती हैं कि आपका
stock इतना गिर गया, अच्छा, so I own this particular stock, say X, right? X saw a massive decline. मैं जाके देखता हूँ 1% गिरा होता है, यार ये massive decline होता है. So there are such apps which are, you know, raising billions of value, raising millions of money on billions of valuations, who are sending you these notifications and are promoting a trading kind of culture कि आप बस किसी तरीके से move कर लो अपना portfolio and you just spend some time on our app so that we can justify further billions of valuations. So that shouldn't happen, right? आपको ऐसी apps रखनी नहीं चाहिए अपने पास. आपको लंबे टाइम के लिए सोचना चाहिए. Ideally, when you are investing, you know, you should be invested for long. ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हो, बिल्कुल सीखो. आई डोंट स्टॉप यू, आई डोंट डू इट पर्सनली, बट फिर ट्रेडिंग अलग चीज है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग अलग चीज है. बट मैंने लोगों को बहुत बड़ा पैसा बनाते हुए देखा है, तो वो देखा है इन्वेस्टिंग के थ्रू. ट्रेडिंग के थ्रू बहुत कम लोग मैंने देखे जिन्होंने पैसा बनाया. ओके, सो अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे. आपने वो पढ़ी होगी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. तो उसमें यस. सर बेन ग्राम ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है पीई पे, पी रेशियो पे. उन्होंने बोला ओके. पी जितना लोअर होगा, मार्केट ने अभी उस वैल्यू को पहचाना नहीं है, तो ओके. पी अगर डबल होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डबल होगी, प्रोवाइडेड दैट अर्निंग सेम रहती हैं. गॉट ठीक इट. है. नाउ वी हैव इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर सौरभ मुखर्जी who said P doesn't matter. You should have a good sales growth in the company, honest management, honest promoter, okay, and a consistent EPS growth. So what are your thoughts on that? There are So two contrary approaches. yeah. So I'll see. Both are wonderful fund managers, and we both agree to that, right? Okay. When it might have happened that in whatever part of the book he has written that particular thing, we should ideally go on to read that book, right, and understand in what context he has said that. Of course, lower the better is a very generalized opinion, but it's not always true, and I'll give you examples, not that I'll leave you like that. So that's one thing. And other thing you talk about, So okay, coming back to this topic. So if I talk about Mr. Benjamin Graham's thing, so at that time, even the markets were not as valued as they are right now. You know, the Yeah. price to earnings multiple might not have been very high at that time. So it might have drawn more significance when Mr. Graham was writing this book. If we talk about these consistent compounders, why they are trading at a high multiple is because they have consistently shown their power to compound their profits at 15 to 20% CAGR or more, right? That's what is happening. We need to understand the industry size and you know how the company will keep on growing, if it has the pricing power or not. Is it a commodity product which will die after 3 to 5 years or maybe 7 years of cycle, or is it something which is a structural compounding machine which has power to compound over a 20, 30, 40 year period? What is its moat, and what is its total addressable market size and all those things. So yeah, it happens that way. And I'll if I talk about the example of a low PE stock, I won't name it, but you see, okay, you tell me, Rohit, you tell Okay. me. uh, there's a company which is consistently generating an ROC, return on capital employed, of 15% or more, Okay. right? Sales growth of more than 12 to 15% per annum. Okay. Looks good. Yeah. EPS growth is also similar. Okay. If I talk about some basic other filters, the cash flow to EBITDA ratio, cash flow to operations, cash flow of operations to EBITDA ratios is also very high. If I talk about its industry peers, is it fine with you? Okay. Now, if Fine. I tell you about that company is available at a price to earnings multiple of 8 or 10, will you buy it? Of course. Basis this information? Pause. Yeah. Exactly. Because yeah, I'll tell you why we'll buy it, because we have been taught to just read these four parameters, right? And if we don't dig deeper, we are going. If we are not going to dig deeper, then we are going to lose our money this way. I'll tell you why. Because this stock will stay at this PE only because the director has been to jail. Has been to jail
he has been consistently questioned by the Enforcement Directorate upon some scam that happened in the UPA 2 government. And that's why basically the promoters will be more directed towards, concentrating on getting their director out. And that is a prolonged, very long drawn litigation. So I don't know when the value will be made. Why should I miss out on the years of compounding? So that stock was around 620, 650 in 2017. Now it is trading at around 250. Its earnings have grown. Its sales has grown. Its sales have grown, and its ROC is also consistently at such a good number. Everything has grown, but multiple has gone down. Multiple has gone down significantly. Yeah. Why? Because of this corporate governance lapse, right? And if I had to invest in that company in 2017 based on the knowledge that I have today, I wouldn't have still done that. अगर तब भी मेरे को 10 की पी पे मिलता और मुझे ये विजिबिलिटी दिख रही थी कि कंपनी की बहुत अच्छी मोट है, ये है वो है, बट अगर मुझे पता था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्स है तो मैं करना ही नहीं वाला था, चाहे मेरे को कितनी वैल्यू बेट मिलती हो. क्यों? क्योंकि you see what happened today, right? So we should learn from the experiences of the past, from the examples of the past to invest in future, and that's how we save our capital and compound our money. अब वो मान लो 650 का हो भी जाए, वो मान लो 1000 का भी हो जाए, राइट? तो आप देखो उसने 2017 से लेकर 2022-23 तक कितनी रिटर्न दे दी यार. नहीं दी ना कुछ, राइट? So we should not run after low P stocks blindly or cancel out high P stocks like Nestle. वो 2017 में भी 90 की पी पे था और तब भी वहां से वो 4-5x हुआ है, राइट? 5 साल के अंदर. सो मतलब it's not as simple. I wish it was that simple and we would all have been making money and not doing our jobs and sitting at home and making money blindly. Of course, I'm not saying it's difficult or it's impossible, but you need to dig a little deeper. It's not just about PE or about ROC or about sales growth. It's not just about that. You have to dig a little deeper. So I have friends who say, बॉस यार इतनी रिसर्च नहीं होगी मुझसे, सिंपल रास्ता बना, मैं कैसे पैसा बनाऊं, मुझसे नहीं होता ये पी आर ओ सी, मुझे नहीं समझ में आता कैसे जज करें, तो मुझे ये बता कि कहाँ पैसा लगाऊं. तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? आप अपने ऊपर पैसा लगाओ सबसे पहले तो. अगर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आपको अपनी स्किल्स पे इम्प्रूव करने पे हमेशा फोकस करना चाहिए. दैट्स हाउ यू विल मेक बिग मनी इन योर यू नो from your salaries or from your business income or whatever it is. Keep on sharpening your skills. That's the best investment advice that I have ever got from my seniors, right? I invested a lot of time, a lot of efforts in CA, and that's why I could build a lot of capital and invest all of that capital, or maybe a significant portion of that capital, into stock markets by learning about stock markets, and made very good returns in the last 3 to 4 years. So invest in yourself, and ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे सीखो, आप लगाओ ऐसा, धीरे धीरे करके लगाओ. Till that time you can invest in good mutual funds, and yes, that's how you should go about it. और सीखो धीरे धीरे. You can learn these things in 2 to 3 years if you devote at least 1 or 2 hours a day and a little more on weekends. It's very much doable. या सो जैसा कि हमने देखा है, जो मेरे साथ के दोस्त लोग हैं उन पे उतने पैसे नहीं है. वो बोलते हैं कि मेरे पे 500 रुपीज़ है यार, मैं क्या लगाऊं पैसा, रहने देता हूँ, जब मैं कमाऊंगा तब लगाऊंगा. तो टिपिकली ये प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ते रहता है, मैंने ऐसा जनरली देखा है. बाय द टाइम लोग 26-27 के होते हैं, प्रॉपरली कमाना शुरू करते हैं, तो तब जाके उन्हें याद आता है कि हाँ पैसा भी लगाना था. उसके बाद जब याद आता है तो फिर एक टाइम लगता है मार्केट को थोड़ा समझने में. पहले पहले तो सब गलती करते हैं, गलत म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, गलत स्टॉक्स ले लेते हैं. तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि अभी से आप ट्राई करो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लो. बाय द टाइम यू विल अर्न गुड, यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग गुड क्वालिटी कंपनीज और म्यूचुअल फंड. तो उसमें आपकी एडवाइस क्या रहेगी उनको? यार उस केस में मेरी अगेन ये एडवाइस रहेगी कि आप अगर आपके पास 500,000 रुपये हैं तो आप अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी पे पहले फोकस करो. और उसके साथ में ये नहीं कहता, मतलब जैसे अगर आपके पास 1000 रुपये आप कह रहे हो, तो मैं कहता हूँ 800 रुपये आप लगाओ अपनी स्किल्स शार्पन करने पे. और 200-200 रुपये सेव करके जितने भी मिनिमम आप म्यूचुअल फंड के अमाउंट पे लगा सकते हो आगे जाके सेव करके लगाओ. बिकॉज
One is that you are going to increase your top line potential. जो आपकी salary है, जो आपकी business income है, आप उसी से बढ़ा पाओगे, right? On investing in yourself, by investing in yourself. And second, you will be able to increase your, not increase, I would say, you will be able to inculcate savings behavior and an investing behavior, which is the discipline that you require. You know, old habits die hard. So if you keep on saving from day one, and you have a little investment when you have lesser capital, then you will tend to save more and more when you grow up and when you have more money. So first thing is that, you know, we should focus on making more money from our skills, from our day job, right? And at the same time, we should focus on learning to invest as well. तो मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि टिपिकली रिटेल इन्वेस्टर जो करता है, जैसे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर, जितने भी लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, 10 लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, उनमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो बेसिकली Right. रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, वो देखता है कि किस किस ब्रोकरेज हाउस ने कैसी रिपोर्ट निकाली है, बाई निकाली, सेल, ओवरवेट, अंडरवेट, आउट परफॉर्म, तो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेता है बहुत जल्दी। और रिटेल इन्वेस्टर एक ये भी चीज़ करता है कि स्टॉक बढ़ रहा होता है, ये तो मेरे साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ है, मेरा एक फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो जैसे ही कोई स्टॉक बढ़ता है वो मेरे को कॉल कर देता है, भाई ले लूँ, भाई ले लूँ, दिन के 4 बार कॉल करता है, भाई ले लूँ, ले लूँ। मैं उससे बोलता हूँ रुक जा, रुक जा, और वही स्टॉक अगर उसने ले लिया और वो 2% भी नीचे जाता है तो वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है। तो ऐसे में आपकी एडवाइस क्या रहेगी कि इम्पल्स सेलिंग को कैसे रोकें? मैंने पहले ही बात करी थी इसकी सेशन में। ये मेरे साथ भी होता था जब मैं 2017 में चीजें करता था। वो तब होता है जब यू हैव बोरोड कन्विक्शन। आप बोरोड कन्विक्शन कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो? रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट से। आपकी अपनी तो रिसर्च है नहीं, आपने टारगेट देख लिया और डाल दिया पैसा, राइट? मैं से आपको हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट ला के दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स दे आर मोर इंटेलिजेंट पीपल देन आई एम एंड दे रिसर्च फार मोर देन आई कैन डू, पॉसिबली डू। बट मैं ऐसे आपको 1000 रिसर्च रिपोर्ट्स ला के दे सकता हूँ जिन्होंने टारगेट 2 साल पहले कुछ दिया था और दूर दूर तक उसके आसपास भी प्राइस नहीं है, आधा हुआ पड़ा है जब से उन्होंने दिया था। उससे प्राइस आधा हुआ है और ऊपर वाला तो भूल ही जाओ जो था। सो बोरोड कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको खुद सीखना चाहिए। भले ही धीरे धीरे सीखने में आएगा, बट ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। बोरोड कन्विक्शन से आप पैसा लगाओगे तो आप कभी मतलब ऐसे आप कुछ वैल्यूएबल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे आगे जाके, मतलब जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या सो एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है इंडियन पीपल का, जो कि है यूलिप, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप कैसे मोटिवेट करोगे एक इंडिविजुअल को? सपोज आई एम द इंडिविजुअल, मेरा अंधा भरोसा है यूलिप पे, मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट फ्रॉड होते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, कभी पैसा नहीं बनता है, बड़े बड़े लोग पैसा बना के ले जाते हैं, और मैं यूलिप में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे कि मैं आके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं? रोहित, आप मेरे को बताओ पहले तो, यूलिप में पैसा कहाँ लगता है? मार्केट्स में ही लगता है। मार्केट्स में लगता है तो फिर मार्केट्स में ही अगर, मतलब फॉर एग्जांपल आपको नहीं कमाया जाता तो आप म्यूचुअल फंड्स में अच्छे मैनेजर्स के साथ पैसा लगाओ। तो आप, दो ऑप्शन है, या तो आप यूलिप में लगाओ या आप म्यूचुअल फंड लगाओ। आप समझो यूलिप में कहाँ पैसा लग रहा है, राइट? उसमें आपका क्या एक्सपेंस रेशियो बैठ रहा है, राइट? और अगर उसी कैले या उससे बेटर कैलिबर का म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको मिल सकता है एट अ लोअर एक्सपेंस रेशियो, देन मे बी यू कैन कंसिडर गोइंग अहेड विद दैट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ये बता सकते हैं कि फाइनेंस में कौन कौन से करियर हैं? इक्विटी रिसर्च है। अगर मैं बात करूं फाइनेंस एज इन, यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी मार्केट्स। या इक्विटी मार्केट होंगे? इक्विटी रिसर्च है। इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली तो आप इक्विटी रिसर्च में जा सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स के आप, यू नो, यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ वर्क। यू कैन वर्क इन hedge funds, you can work in as a hedge fund analyst, you can work in with AMCs, the mutual fund managing companies, and all those things, and there are many other examples as well. तो या जैसा कि आपने बताया अभी कि आप 2017 से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने इतना बड़ा कोविड फॉल देखा, उससे पहले स्मॉल कैप्स की हैमरिंग देखी, तो आप एक क्या लेसन देना चाहेंगे कि जो यंग टीनेजर है या जो जिस पे अभी नया नया एक्सपीरियंस है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, 1 या 2 साल का, तो आप उसको क्या लेसन देंगे कि या क्या टिप्स देंगे कि ये चीज़ों का ध्यान रखना तो आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी?
पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और बोरोड कन्विक्शन पे मत रिलाई करो। बोरोड कन्विक्शन पे आप रिलाई करोगे, अगेन वी हैव स्पोक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द इंटरव्यू, एंड वापस बोल के क्या फायदा, वही है बात, सेम बात ही है जो चले आ रही है। ओके, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो मार्केट्स को सीखने के लिए, तो आपकी 4-5 या जितनी आपको रेकमेंड करनी है बुक्स आप जो स्टॉक मार्केट पे रेकमेंड करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं स्टॉक मार्केट से पहले आपको चाहूंगा कि आप थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझें, एंड अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स एंड हाउ you should go about it. So Rich Dad Poor Dad is my first recommendation. Psychology of Money is another good thing. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे मत जंप करना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बुक है, चालू उससे नहीं करना चाहिए। देन यू कैन रेफर डायमंड्स इन द डस्ट बाय मिस्टर सौरभ मुखर्जी, दैट इज अ ग्रेट बुक। And if I talk about other good books that you can start with is One Upon Wall Street by Peter Lynch, and another one would be The Warren Buffett Way. तो लाइक जैसा कि मैं मान लेता हूँ मैं एकदम न्यू इंडिविजुअल हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे एज ए इसको सीखना है और इसमें करियर बनाना है आगे चल के। तो एक कुछ कोर्सेज क्या होंगे जो मैं अभी से कर सकता हूँ, तो जिससे कि मेरा आगे का करियर में स्मूथ रहे, तो वो कोर्सेज क्या आप रिकमेंड कर सकते हैं। लाइक सीए होता है, सीएफए होता है, इसके बाद भी जरूरी नहीं है आपको मिल जाए जॉब, यू हैव टू एग्जिबिट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए, यू शुड हैव डन योर इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑन सम स्टॉक, और आपको कई इंटर्नशिप्स लेनी चाहिए आइडियली ऐसी इंडस्ट्रीज में। बाकी या मतलब बेसिकली यही है। और if you want you can enroll for our budget courses also on fundamental analysis to understand how how you should pick stocks and how you should be building a portfolio. And currently we are running it at a very nominal price because we want everyone to learn at nominal cost. So you can log on to learn www.learnpersonalfinance.in and enroll for a fundamental analysis membership. ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो वो आप एकदम दिल से आंसर कर सकते हैं कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी खुद को, अपने यंगर सेल्फ को, या आपने जो गलतियां करी अपनी जर्नी में, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। पढ़ना चाहिए था यार पहले, लाइक इफ क्या पढ़ना चाहिए था। मतलब शुरू से समझना चाहिए था, नॉट कि कोई किताब पर्टिकुलर पढ़नी चाहिए थी या कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ना चाहिए था, शुरू से पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, शुरू में वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मिस्टेक व्हिच टॉट मी दैट आई शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन लर्निंग, so that's what I'm doing right now. So it's helping me wonderfully, it has helped me wonderfully in the last 2 to 3 years. So I'm happy to have made those mistakes, but had I met myself in 2017, I would have said, पढ़ पहले बाद में इन्वेस्ट करिए। ओके, दैट्स अ वंडरफुल एडवाइस। तो थैंक्स करण फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।